सो लॉट ऑफ पीपल कन्फ्यूज्ड वाइल ट्रेडिंग इन ऑप्शंस, और हो भी क्यों ना वो एक कन्फ्यूजिंग है भी ऑप्शंस ट्रेडिंग, ठीक है. बट द मेजर इशू कम्स वाइल ट्रेडिंग इन ऑप्शंस इज सेलेक्टिंग द स्ट्राइक प्राइस एंड ट्रैकिंग द चार्ट. आप कंफ्यूज हो जाते हो कि विच चार्ट यू हैव टू लुक, आइदर यू वांट यू हैव टू सी स्पॉट चार्ट, आइदर you have to see future chart. So hi, this is Gautam Kashyap, and today I'm going to try my best to solve this issue. And मैं कोशिश करूँगा कि आज के बाद इस वीडियो के बाद आपकी ये प्रॉब्लम एटलीस्ट सॉल्व हो जाए. ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. सो बिफोर मूविंग टू द सेलेक्टिंग द स्ट्राइक प्राइस, पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको चार्ट कौन सा देखना चाहिए फॉर ट्रेडिंग एंड ऑप्शंस. आइदर यू शुड गो विद द स्पॉट चार्ट, आइदर यू शुड गो विद द फ्यूचर चार्ट. तो ये बहुत कन्फ्यूज़न है, तो बट मैं एक सिंपल टर्म्स में समझा देता हूँ कि आपको जो देखना है वो देखना है आपको स्पॉट चार्ट. ठीक है, क्योंकि वही एक अंडरलाइंग एसेट है जो जिससे डिराइव होता है. फ्यूचर एक खुद एक में एक डेरिवेटिव है. ठीक है, वो खुद में एक डेरिवेटिव और ऑप्शन भी एक डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव से डेरिवेटिव डिराइव करने का कोई मतलब है नहीं. तो पहली थिंग, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि यू हैव टू सी फॉर द स्पॉट चार्ट. And for the detailed video, I have already made a video here. You can watch in the I button. मैं यहाँ कहीं पे I button पे डाल दूँगा, तो आपको वो क्लियर होगा कि you have to see the spot chart for selecting the when you trade with the options. ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेड करना है, कोई भी प्राइस अगर मूवमेंट हो रहा है तो आपको स्पॉट चार्ट के मूवमेंट की या उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के आपको करना चाहिए. सो डिटेल वीडियो आप देख सकते हो वहाँ पे. नाउ कमिंग टू द सेलेक्टिंग द स्ट्राइक प्राइस. स्ट्राइक प्राइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उतना है भी नहीं जितना लोग इसको एक्सटेंड करते हैं. ठीक है, काफ़ी सिंपल है. फर्स्ट, फॉर सेलेक्टिंग, बिफोर सेलेक्टिंग द स्ट्राइक प्राइस, यू हैव टू फर्स्ट हैव अ क्लियर विजन कि आपका प्लान क्या है, व्हाट यू ट्राइंग टू डू. आइदर यू वांट टू गो विद द ऑप्शन बाइंग थिंग, ठीक है, और आइदर यू वांट टू गो विद द option selling thing. Okay, so that's for the different thing you have to have a different kind of plan before selecting the strike price. And you need to have a view whether in going in the option buying or whether you are going either you are going with the option selling. You have a particular view, either you go with the short term view or either you go with the long term view. What you have a view. Okay, view आप पहले clear कर लो कि क्या है. So let's consider the buying. Okay, what I meant of the short term view. Short term view is like कि from 1 minute, from 1 minute to day end. Okay, 1 day time frame. Up from 1 minute, either you are scalping or either you are doing some kind of intraday holding of the 1 hour time frame. ठीक है, तो for that kind of thing you can go anything like ATM भी you can buy at the money, in the money भी you can buy. Okay, and you can also buy like like little bit out of the money. Okay, it's fine to be buying and out of the money. It's nothing to do like ki you are you have facing a time value. For short term, you don't have much to lose in the time value while trading in option buying. Or when you go with the option buying, I believe ki you have some kind of plan. Okay, you have some kind of trading strategy. What you're believing in taking the decision in the option buying or moving the direction. So considering that thing, so if you are going with the short term, you can aram se buy anything at the money, in the money or OTM. So I'll prefer at the money is the best thing. You can go with the option buying and OTM. Like अगर मैं यहाँ पे आपको अगर दिखाऊँ तो suppose Nifty is trading at 17,900. So you can aram se go with the 17,900. It's 112 rupees. Or you can if you it's kind of expensive, अगर आपको थोड़ा cheap चाहिए तो you can buy 2 strike or 3 strike up out of the money. तो आराम से you can get 50 rupees का premium. ठीक है, let's say अगर आपको example दिखाऊं, if you see this is the movement of, ठीक है, तो it's 17,800 का. Okay, 17,900 it's currently moving. Let's say I'll show you 17,950 का call. ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो it moved आराम से, ये 27 पॉइंट आपको मूव दिया है विद द मूवमेंट ऑफ, ठीक है, विद द मूवमेंट ऑफ 69 पॉइंट्स. या इफ यू होल्ड, इफ यू सी हियर, इफ यू होल्ड टिल लाइक टिल डे एंड, इवन दो इट्स 65 पॉइंट्स, ठीक है, 65 पॉइंट्स, यू हैव टू पे ओनली, यू विल गेट ओनली 15 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी. ठीक है, एंड सिमिलरली इफ यू सी एट द मनी का प्राइस, ठीक है, यहाँ पे आपको 20 रुपीज मिलेगा. तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जब आपके पास यू हैव अ टाइम विंडो. Unless until you are in the short term, you can आराम से buy any kind of 2-3 strike price of ऊपर और नीचे.
तो ये चीज क्लियर हो गया होगा, आई थिंक, आई होप ये क्लियर होगा। शॉर्ट टर्म के लिए यू कैन बाय, इट्स नथिंग टू डू कि you must have to be in the like in the zone of in the money or at the money, or you don't need to buy and out the money, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास प्लान है, यू कैन आराम से बाय दिस। एंड हाँ, प्रॉब्लम तब आती है जब व्हेन यू गो विद द लॉन्ग टर्म। व्हाट आई मेंट अवर लॉन्ग टर्म इज 1 डे के ऊपर, जब आप ओवरनाइट, ठीक है, ओवरनाइट जब यू होल्ड द पोजीशन, ओवरनाइट में यू हैव टू पे द टाइम डिके, ठीक है, you have to pay the time decay. With the increase in time, okay, there are decrease in premium. If market don't move or static, kind of कि market अगर move करके ऊपर गया और वापस से अगर नीचे आ गया और gap up gap down नहीं होता है, ठीक है, let's consider it's a flat moving market and gap up gap down नहीं होता, तो overnight decay you have to pay. Okay, so the main thing, movement, first thing first कि options का movement जो depend करता है वो delta पे depend करता है। You can see in Opstra के chart पे, आपको NSE के chart पे delta का नहीं दिखेगा, Opstra पे you can see, I have already taught the options Greeks, वो वीडियो भी मैं आई बटन पे डाल दूंगा। तो you can see at the money का delta it's 50, which delta is in the short term, अगर 100 points की movement in there is a 100 points movement in Nifty, then the strike price will move around 50 points. Okay, that's the thing कि 100 points के movement पे 50 points, जो भी delta है उसके 100 points के movement पे आपको ये इतना points movement मिलेगा। So that's the delta. Coming back to the long term, so I'll give an example, ठीक है। So this is the time कि आपको अगर this is the time you thought कि market is going to be up. So what you need to do, you need to buy an options, okay, 17,900 का options. So let's see 17,900 का options. If you see 17,900 का options, 126 पे it was trading around, okay, it went down to 67. But if you see, it's still in the loss of 12 rupees, okay, it's still in the loss of 12 rupees. If you see from here to here, it's still in 12 rupees or 11 rupees cut a loss. But if you see from here, from your entry point to till now, it's around 40 points movement, okay, in your direction, but still your options is showing 12 points of loss. So that's the thing कि when you having a plan in option buying for the long term, you need to think कि I'll not suggest कि go with the options, only if you have a plan, something like that कि not just a view, if you just buying view or bullish view or bearish view, okay, if you just have a view, don't go for the option buying, okay, don't go for the option buying, yeah. But if you trading on a breakout like in suppose in Reliance or Tata Motors, if you think कि Tata Motors और ऊपर जाने वाला and suppose it's moving around the resistance, if you think it's going to be a breakout, then you can आराम से buy for the options, because it gives a sudden movement. While in breakouts, when it gives a sudden movement, your option price also hikes. That's why sometimes you see from 1 rupees it goes for the 100 rupees and 10 rupees. तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ. It happens only 1 or 2 times of in the points, especially in expiry, because expiry have a different thing कि it have a settlement price. Okay, so anyhow अगर Nifty is trading around 17,900 and the options 18,000 ka call options is trading around 1 rupees. So suddenly if the market is moving around 18,200, so it has to move around 100 points to get the settlement price. So that's why it happens from 1 rupees it happens to the 100 rupees, and that happens only 1 to 3% of the time. So you don't have to bother about that thing कि I want to capture that 1% of the thing. Okay, now coming back to the option selling thing. ठीक है, option selling में what you need to do, even the same thing, if you want to going for the short term or going for the long term, first you have to be a view, and while in trading and expiry for the short term spacely happens for the expiry. ठीक है, लोग जो short term के लिए करते हैं वो spacely करते हैं expiry के लिए. ठीक है, expiry trade करने के लिए करते हैं, on the Thursday basis they use for the short term. And I'm not talking about any strategies like strangles or iron condor. I'm talking about just a naked thing. Okay, so expiries के दिन they are going for the short term. So on expiry, even on expiry you can go for the ATM, okay, at the money ka call, or like you can go for the out of the money, anything is fine. So आप आराम से कर सकते हो, and especially in the money you don't go.
ठीक है। इन द मनी का जो टाइम डिके होता है वो थोड़ा कम होता है। सो ट्राई टू गो एट द मनी, और आउट ऑफ द मनी आप कितना भी जा सकते हो जितना प्रीमियम यू वांट टू टेक इट। इफ यू हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू, जस्ट अ व्यू, लाइक सपोज इट्स अ बुलिश व्यू और बियरिश व्यू, ठीक है, जस्ट अ व्यू, नो ब्रेकआउट, नो नथिंग, यू जस्ट हैव अ व्यू कि मार्केट इज गोइंग टू बी बुल इन दिस टाइम और मार्केट इज गोइंग टू बी बियर इन दिस टाइम। सो फॉर दैट थिंग यू कैन आराम से सेल इन द मनी ऑल्सो, ठीक है। इन द मनी भी सेल कर सकते हो और एट द मनी भी सेल कर सकते हो, एंड आउट ऑफ द मनी यू कैन आराम से सेल, ठीक है, टू गेट दैट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यू थिंक कि एट दिस लेवल से ये मार्केट नीचे नहीं जाएगा, तो यू कैन आराम से सेल द सपोर्ट, ठीक है। तो OTM यू कैन आराम से सेल, एंड इन द मनी if you want to sell in the money, it's a little bit, it needs a experience. For long term you can आराम से sell at the money, okay, at the money what I meant कि अगर निफ्टी it's 17,900, you can see here also only, ठीक है। अगर आपका व्यू क्या था कि market is going to be down, you sold a call, ठीक है, at this point of time you sold a call, ये आराम से नीचे गया, and even you have an view till expiry कि आप expiry तक होल्ड करना चाहते हो। If you see even it's above the your बाइंग प्राइस 40 रुपीज, एंड स्टिल फॉर द टाइम डिके जो आपको लॉन्ग टर्म में आपको होल्ड करने का टाइम डिके मिला, उसकी वजह से आपको 12 रुपीज का फायदा मिल रहा है, इवन दो योर स्पॉट प्राइस इज मूव्ड अगेंस्ट योर डायरेक्शन 40 पॉइंट्स। तो दैट्स द व्यू कि आप आराम से ये कर सकते हो। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको किस टाइम पे क्या करना चाहिए, एंड इट्स नथिंग टू डू, ट्रस्ट मी, इट्स नथिंग टू डू कि आपको ये नहीं करना चाहिए, बाइंग नहीं करना चाहिए, सेलिंग नहीं करना चाहिए। इफ यू हैव एन दैट पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर strategies or your own, I'll not say a particular strategy, there's nothing called a particular strategy, your own self strategy, your own tested thing, your own tested way of trading, then you can definitely go for the option buying thing. And if you have a short term view, you can go for the out of the money also, ठीक है, 2-3 स्ट्राइक प्राइस आप out of the money भी कर सकते हो। And if you have an long term view, then I'll suggest don't go for the option buying unless until you have an breakout kind of thing. So I'll wrap up this video here only. So you can like this video, share this video with your friends who want to trade in options, okay, and make sure you like subscribe that button, okay, hit that button to subscribe that channel. So till then, thank you, and happy trading.